हेलो हेलो। Yes. Let me see. Figuring out how stream works. तुम नहीं बोलोगे स्ट्रीम में? हेलो हेलो। Yes. तो मुझे नोटबुक लाने दे। ए, मेरे को तो दूसरा नोटबुक बनाना था। हाँ, कि डिस्कशन चल रहे थे। हाँ, वो आए। हम्म। हम दो इंसानों को सुन रहे हैं कैसे? क्योंकि YouTube में डिले है। तो ना यूट्यूब पे देख। अच्छा हाँ, तो हम डिस्कॉर्ड पे स्ट्रीम करें। No, it's fine. तुम हम लोग YouTube में स्ट्रीम कर सकते हैं, ऐसे पता चलेगा हम लोग कितना घंटा पढ़े एंड I'll just mute YouTube. मतलब YouTube में म्यूट कर दूंगी। ठीक है ठीक है ठीक है। तो मिल जूम कर देते हैं, ठीक से दिखाई दे। हम्म। चलो हमको सिखाओ तुम कैसे पढ़ते लाइक हो। पहले तो हम क्या करते हैं भाई, आज का जैसे 30 अप्रैल का है, ठीक है। कुछ ज़्यादा हम्म इम्पोर्टेंट है नहीं, वो मनी मार्केट ऑप्शन वो तुमको पूरा बैलेंस शीट दिखा देगा। वो हाँ हाँ हाँ, आई तो रिमेम्बर एंड आई डोंट अंडरस्टैंड फिर उतना एनीथिंग। उतना करने का इन डेप्थ जाने की ज़रूरत नहीं है बस। अब बाद में ना इसका एक रिलीज़ करता है आरबीआई, नहीं कोई और थर्ड पार्टी जैसे वो सब नहीं होता, एजुकेशन हाँ, इंस्टीट्यूशंस। तो वो लोग ही रिलीज़ कर देता है कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन रिजल्ट आया है तो ऐसे में ठीक है। बट तो अभी मेरे ये हिसाब सब में से कुछ तो नहीं पढ़ना, जैसे गवर्नमेंट स्टॉक, VVRR, वी आर आर। वर्टिकल रेपो रेट। हाँ हाँ हाँ। नहीं ये सब करते रहते हैं, बहुत डेली आता है, हर एक दिन तुमको दिख जाए तो उतना नहीं याद कर पाएंगे जब तक कुछ इम्पोर्टेंट नहीं हो रहा है। जैसे क्या कभी क्या करते हैं, ये क्या है? सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। उसे क्या बोलते हैं, हाँ, WMI बोलते हैं शायद। ये क्या है? आरबीआई इश्यूज फाइनल अमेंडमेंट्स ऑन रिवाइज, ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं? क्या? फिर अमेंडमेंट Amendment डायरेक्टिव्स actions ऑन। review regulatory include legislation payment for not availing public funds and system interference with type 1 NBFC। टाइप 1 NBFC है तो हम तो इसको लिखे हुए हैं, हम यहाँ पे है मेरा वैसे। हम इम्पोर्टेंट तुम बोल पढ़ सकते हैं रहे इसको। हो? उतना इम्पोर्टेंट नहीं बट इट इज पूछ सकता है। हम बताए क्या करेंगे, देखो मेरा मार्च का, देखो तुम वो वाला पीडीएफ देख, वो मार्च वाला जो आरबीआई था, इज इट कवरिंग एवरी इम्पोर्टेंट थिंग? हम्म। कि मुझे बैठ के अभी मार्च का एक बार नहीं नहीं, हाँ वो आरबीआई काफी देखना काफी पड़ेगा? हद तक कवर कर दिया, उतना जानने की जरूरत नहीं है। उतना तुम पढ़ RBI प्रेस रिलीज से, बट फिर PIP भी हाँ कवर कर एंड जो करंट अफेयर्स जो करती है उसको भी हाँ, कवर नहीं कर तो दे अगर ऐसा है जो तो हम सके। आरबीआई का प्रेस रिलीज नहीं देखेंगे। जैसे अभी अप्रैल तक खत्म हो हाँ, गया तो वो लोग टेक्स्ट बुक वाला वापस से वो लोग देख जितना पीडीएफ जो निकालेगा। तुम्हारा RBI आई प्रेस स्टडी रिलीज फ्रॉम में आता देयर। है ना इम्पोर्टेंट वाला, वो मैम नहीं है जिसका बोल रहे थे प्रिया मैम करंट कवर कर अफेयर्स, हाँ लेगी। हाँ। तो वो कवर कर देती है। कुछ कुछ नहीं होता हम्म, है, जैसे ये वाला इम्पोर्टेंट है।
जैसे क्या? एस जी बी, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो एसजीपी होता है ना, सॉवरेन गोल्ड तो बॉन्ड्स। उसका जो वो 2019 और 20 का जो सीरीज था, ठीक है, तो उसका प्रीमेच्योर पीरियड आ गया है। हर 6 साल में मतलब इसका एक प्रीमेच्योर पीरियड आता है कि तुम उस समय निकाल सकती है पैसा, ठीक है। देख, और अगर नहीं निकालेगी तो फिर तुम 12 साल के लिए पूरा। बाप रे। तो उसी के बारे में हमको पढ़ना था, तो हमसे हम ऐड किए हुए हैं, तो पहले देखते हैं इसको, ये वाला पहले ओके पढ़ तो लेते तुम, हैं। आई मीन लाइक, तो बेसिकली तुम बेसिकली वो वाला पढ़ रहे हो। हम वो सोच रहे, शुड आई फॉलो यू और शुड आई स्टडी समथिंग एल्स। स्टडी तुम मतलब पहले देख ले कि कैसे हम पढ़ते हैं, फिर तुम देख ले कि तुमको कैसे कंफर्टेबल है। ओके। ये कौन सा है? ये 28 अप्रैल का है। हम्म। सक्षम शाकाहारी। आरबीआई लॉन्चेस मिशन। ड्रॉ नहीं कर सकते इसमें। इसलिए आरबीआई has been support the cooperative bank sector। कि आरबीआई अर्बन कोऑपरेटिव बैंक के लिए लॉन्च्ड। ते पता है ना who is the governor of RBI right now? हाँ, मल्होत्रा, संजय मल्होत्रा। Okay, now name four of its deputy governors। हम क्या नाम तो था, एस से जे करके नाम है उसका जानकी लास्ट रमन। में, अभी पढ़े थे वो। जानकी क्या रमन। तो, शांकी रमन। ओ नो, हम भूल गए, अभी हम पढ़े थे वो। ओ पूनम माय गुप्ता। गॉड। नहीं, वो गुप्ता नहीं, एस से हाँ। था उसका नाम। नहीं। वो कैसे? क्या? नहीं कैसे नहीं, रे हम बोल रहे रवि? कि, अरे नहीं नहीं नहीं, हम बोल रहे हैं कि हमको याद नहीं, मतलब अभी जो हम मार्च का पढ़े ना, तो ओ, उसमें एक डेप्यूटी गवर्नर का नाम था जिसका शिरीष नाम था चंद्र ऐसे मुर्मू। क्या? शिरीष चंद्र नहीं मुर्मू। नहीं। हम नहीं, तो मतलब, जितना, बाप रे, हम जितना नाम ले रहे, दे आर ऑल डेप्यूटी गवर्नर्स। ओके बट हम जिसका नाम पढ़े उसका नाम एस से शुरू होता है। बट रुको, हम ढूंढ रहे हैं वो पीडीएफ में क्या है। आई ओ एम माय गॉड। गेटिंग हिज नेम, डू नॉट जज मी। इंग्लिश। अरे यहाँ नहीं आएगा। कहा क्या? यहीं पे तो था, नाम हम किए थे। किधर गया? सेल्फ रेगुलेटरी, सीआरआर इनिशिएटिव। ओ माय गॉड। अच्छा अच्छा, सर्च कर लेती हूँ, डेप्यूटी गवर्नर, देखो देखो, डेप्यूटी। हम तो क्या बोले, हाँ, जानकी रमन। श्री सवमी, हाउ डू यू प्रोनाउंस इट? इट्स समथिंग लाइक उसका स्वामीनाथन। सव। What the hell? ओके, स्वामीनाथन। ओके, देख, हम डू तुमको नॉट नो क्या हाउ टू बोले? प्रोनाउंस दैट। व्हाट डिड आई टोल्ड डूड? हम तुमको बोले जानकी रमन, तो बोले हाँ वो नहीं था, वो नहीं था, वही तो है। पूनम गुप्ता क्या बोले। स्वामीनाथन जानकी रमन है? हाँ, हम तो बोले एस एस बोल दिया, वही बोले जानकी रमन। बट इसमें लिखा हुआ है स्वामीनाथन जस्ट ठीक है, जे। एस। अच्छा, तो वहाँ पे पूरा नाम नहीं लिखा था, ठीक है। बस श्री स्वामीनाथन जे लिखा। ठीक है, जे अब के याद बाद करें कॉमा जानकी है। रमन। जानकी रमन, ठीक है। जानकी रमन, दैट इज बट मोर। उसके बाद तुम रवि बोल रहे थे, वो भी तो बोले नहीं, वो भी नहीं है। फिर नहीं हम बोले नहीं, पूनम वो गुप्ता, नहीं वो भी बोल नहीं रहे। है। फिर हम आई शीरीष एम चंद्र। टेल ओके ओके, देखो, सॉरी मैं सॉरी वो सॉरी। बोल रही हूँ कि वो जो मैंने अभी पढ़ा उसमें नहीं था। हम ये नहीं बोल रहे कि डेप्यूटी गवर्नर नहीं है। हम ओके, जो नाम हम मेरे दिमाग ठीक है, में वेल आ रहा वेल था वेल वेल। वो लोग वो नहीं है, हम ठीक है, वो बोल रहे हैं। सॉरी आई सॉरी। एम नॉट डिनाइंग कि भाई वो लोग डेप्यूटी गवर्नर नहीं है। ठीक है, तो रुको, कौन कौन है डेप्यूटी गवर्नर बताओ, हम लिख लेंगे उसको स्टार्टिंग में। टी रविशंकर ने, हाँ, उसका नाम सुन, उसका तो टी स्वामीनाथन जानकी रमन। रवि, रुको रुको, टी हाँ, रविशंकर। पहले ऐसे लिख दे कि व्हेन वाज आरबीआई फॉर्म्ड, आरबीआई हिल्टन यंग कमीशन, ठीक है। हाँ, वो सब हमको रिवाइज करना अभी, वो हिल्टन यंग उधर का बुक निकाल। 1934 में इसको बोला गया था बनेगा, बट 1935 आरबीआई एक्ट आया था, तब वो ए फॉर्म ए हुआ था। ए ए ए, ठीक ए है, रुक। स्टार्टिंग में इसका तुम जो हेड। तुम हाँ। मेरे को पहले डेप्यूटी गवर्नर, तुम मेरे को वो
हाँ वो क्योंकि बता हम वो रहे हैं, हम लिखना तो शुरू स्टार्टिंग करते हैं। स्टार्टिंग से लेके पूरा फाउंडेशन से अरे गवर्नर्स, फिर वो डिप्यूटी मेरे पास गवर्नर, है कॉपी फिर में पांच लिखा हुआ, सब्सिडरी। वो हमको रिवाइज करना रिवाइज है। कर रहे हैं ना अभी हम लोग इस डिस्कशन में। तो अरे यार डेली तो हर मैं एक न्यूज़ में। उसको क्या? हम उसको लिखना शुरू कर दिए हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, आई एम टेलिंग यू नाउ। संजय मल्होत्रा गवर्नर, ठीक हाँ है। वो पता है। और इसका टी चार डिप्यूटी। रविशंकर। हाँ। फिर एस स्वामीनाथन, एस जानकी रमन। स्वामीनाथन। एस स्वामीनाथन नहीं, एस का मतलब भी स्वामीनाथन है, एंड देन यू जे, जानकी रमन। जानकी रमन। फिर फिर पूनम गुप्ता। पूनम गुप्ता। फिर फिर तुम्हारा शिरीष चंद्र मुर्मू। शिरीष श्री एस टी रीश चंद्र गुप्ता। मुर्मू। क्या शिरीष चंद्र मुर्मू? हाँ। MURMU। मुर्मू, यस मुर्मू। ओ माय प्रेसिडेंसी गॉड। वाला मुर्मू। Oh my god, I did not know कि oh my god, are they economist? I want to आ, know more about them. हाँ इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल, हम पता नहीं हमको। मेरे को उतना पता है, पूनम जो गुप्ता वो है इकोनॉमिस्ट। ये लोग पॉलिसी मेकर्स होगा। गुड, रिसोर्सफुल पॉलिसी पर्सन। नहीं, मतलब ऑफ कोर्स इफ यू इतना। आर गवर्नर तुमको बहुत अच्छा खासा नॉलेज है। हाँ डिप्टी गवर्नर गवर्नर। तो है। इट्स लाइक इट्स लाइक इतना ज्यादा ऐसा प्लेसेस में यू रेयरली सी पीपल, नॉट हम्म। सेइंग अबाउट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स इन द सेंस जहाँ पे तुमको अपॉइंट किया जाता है। हाँ ठीक हाँ। है, सुनो सुनो। वो अब चीज़ है। आप इस न्यूज़ के बारे आते हैं, ठीक है। अब तुमको पता चल गया कौन है गवर्नर, कौन डिप्टी गवर्नर है। फिर आगे आगे हम लोग और ओके। प्रोग्रेस करेंगे तो डिस्कस करेंगे उसका पांच सब्सिडीज क्या आरबीआई, ठीक है। लेकिन हाँ अभी क्या हमको पता आएगी? है रेबिट। हाँ। I remember Rabbit व्हाट डज because इट it's डू? like I forgot या about it. ठीक है, आराम से पूरा डिस्कस करेंगे, ऊपर ऊपर नहीं बस। ठीक है। Okay, तो पहले न्यूज़ के ऊपर आते हैं। तो ठीक है। रिजर्व बैंक टू सपोर्ट द हाँ। अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर, लिख ले। urban जल्दी करना प्लीज, ठीक support। है, बिकॉज माई टाइम इज ऑल्सो वैल्यूबल। Okay। तो उसको सपोर्ट करने के लिए जो आरबीआई है उसने सक्षम मिशन को लॉन्च किया है। SAKSHAM। सहकारी बैंक। What the heck? इट इज़ अ कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग इनिशिएटिव। अब Oh पता है ना कैपेसिटी बिल्डिंग क्या God। होता है? हाँ मैंने किया है कैपेसिटी बिल्डिंग। से तुम भी किए बैंक में ना। कैपेसिटी बिल्डिंग बस ट्रेनिंग कैपेसिटी हाँ। बिल्डिंग अंडर सक्षम, meaning to the capable, competent, a large number of training programs in person as well as e-learning courses would be conducted for UCPs. 1.40 lakh participants for various target group board सहकारी member। ये याद करना पड़ेगा ना, सहकारी बैंक। हाँ, सक्षम का फुल फॉर्म लिख सकती हो, शाकाहारी बैंक क्षमता निर्माण, इसमें से एस ए अच्छा शाकाहारी। क्षमता है वो। हाँ। ओके I'm ठीक है। like I'm trying to read, यू ऐसा आर ऐसे थिंकिंग लोग टू का मच। आता है। निर्माण। ठीक है हो गया अब। हम भी लिख ले रहे हैं शाकाहारी बैंक क्षमता इनिशिएट निर्माण। सा कैपेसिटी सहकारी। बिल्डिंग इनिशिएटिव है, आरबीआई लॉन्च किया था टू सपोर्ट द अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर। ठीक है, इसमें क्या होगा क्या? कि दे विल प्रोवाइड ट्रेनिंग, ठीक है, इन पर्सन हाँ एंड ट्रेनिंग। ऑनलाइन। ट्रेनिंग लिख हाँ देते हैं। ट्रेनिंग प्रोवाइड किया जाएगा इन लिखने का भी पर्सन, जरूरत नहीं है, आई हैव गॉन थ्रू दिस। ऑनलाइन। Oh, you've gone through this. The 140 lakh हम participant is कर्म not योगी। important. Okay, for various target groups.
हेड ऑफ रिस्क कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शंस एंड एम्प्लॉयज वर्क इन आईटी फंक्शन अदर क्रिटिकल एरियाज, मतलब जो भी स्टाफ मेंबर सबको एक तरह का हम्म। दिया जाएगा ट्रेनिंग। वो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का, रिजर्व बैंक से endeavor to conduct these training programs with content delivery in regional languages to flexibility के language flexibility रहेगा इस मिशन में। with the umbrella organization UCP and National State Corporate Federation, the mission is to enhance match age operation। बस ये कैपेसिटी बिल्डिंग है बस, और कुछ नहीं है, न्यूज़ खत्म, और कुछ जाने की जरूरत नहीं है। ओके। ठीक है। ठीक है। मिशन याद करना, सक्षम किस लिए लॉन्च किया था? फॉर कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ अर्बन कोऑपरेटिव बैंक सेक्टर, राइट। ये न्यूज़ खत्म। हम्म। एक न्यूज़ खत्म। ओके। नेक्स्ट न्यूज़ इज, हाँ सेकंड, ये पता है ना ये क्या होता है? सेकंड शेड्यूल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, क्या क्यों बोला जाता है सेकंड शेड्यूल? कौन सा सेकंड शेड्यूल? किधर सेकंड शेड्यूल? सेकंड शेड्यूल क्या होता है, मतलब if someone some bank is any bank is नहीं if पता। being added to second schedule, what does it mean, नहीं तुम्हें पता है? पता। आई हैव नो आइडिया। नो आइडिया, ठीक है। सेकंड शेड्यूल में अगर कोई भी बैंक होता है ना, इट मीन्स कि अब वो बैंक विल बी गवर्नड एंड सुपरवाइज बाय आरबीआई डायरेक्टली, और उसके अंडर वो अब रहेगा। तो आरबीआई जब भी रूल सेकंड निकालेगा वो उसके भी शेड्यूल। उसके लिए भी अप्लाई होगा, या फिर कुछ भी सपोर्ट जो आरबीआई देना चाहेगा वो अब उस बैंक को दे सकता है। तब वो लोग ऐड करते हैं कोई सेकंड भी बैंक को शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में। ठीक है। आई कैन इट ऑल्सो, वुड बी लाइक अंडर आरबीआई। या अंडर आरबीआई, ऐसे इन शॉर्ट। इंक्लूजन ऑफ मिजोरम कोऑपरेटिव कोऑपरेटिव बैंक एपेक्स ज़्यादा नहीं है, बैंक। बस बस लिख ले, तुमको पता चल गया व्हाट इज सेकंड शेड्यूल। ठीक है, सेकंड शेड्यूल कमर्शियल बैंक बोलते हैं ना ये, तो ये कॉर्पोरेटिव बैंक है। ठीक है, इसको जो लिस्ट बना है वो सेकंड शेड्यूल लिस्ट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक्ट 1934, आरबीआई ये एक्ट पढ़ना पड़ेगा मेरे को। सेकंड 1934 शेड्यूल। सेकंड शेड्यूल में मिजोरम कोऑपरेटिव बैंक एडेड। ठीक है, दो लाइन हो गया। हम्म। ठीक है। रिसेंटली तो मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, एक आरआरबी को भी डाला गया था, और बहुत सारा आरआरबी गया और कुछ कुछ को ऐड किया गया है सेकंड शेड्यूल में। आई थिंक कर्नाटका का भी आरआरबी को ऐड किया गया था सेकंड शेड्यूल में, आई अच्छा। थिंक, ओके। नॉट श्योर, ओके। सर्च करना पड़ेगा। देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ खत्म हो गया। ठीक है। क्या है पढ़ो। यूट्यूब थोड़ा डिले है और तो डिले, ठीक अभी है तक ठीक हम मिजोरम में। है। हाँ, ये जब तेरा आएगा तो बताना। ओके। वी आर स्टिल इन मिजोरम। अच्छा। अभी आरबीआई इशू फाइनल डायरेक्शन ऑन बेसल 3। अरे बेसल हम बेसल सब भूल नॉर्म्स। गए सारे बेसल नॉर्म्स। हाँ, बेसल 3 कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क अंडर स्टैंडर्डाइज्ड प्रोसेस। ड्राफ्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल शेड्यूल डायरेक्शन। कमर्शियल बैंक्स कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट रिस्क, तो थोड़ा समझना पड़ेगा। प्रोसेस फॉर स्टैंडर्डाइज्ड रिस्क। अप्रोच डायरेक्शन। ठीक है, दिस इज द डायरेक्शन जो लाया आरबीआई इशू किया, seeking feedback for stay from stakeholders, direction the existing standardized approach framework for calculating the capital charge for credit risk, Feedback received from have been examined, can considered, risk decided by have been sensitivity swiftly as well as convergence. As the feedback received on about draft has been examined and accordingly has to know. necessary has been subjectly incorporated for direction statement अच्छा। according to the अच्छा ये फाइनल डायरेक्शन बेसिस क्या okay, है? but it will be in effect from April 1, अप्रैल। 2027। यप। अब ये वाला हमको खोलना पड़ेगा पूरा। अब इसके लिए मेरे को हम क्या हुआ? पढ़ने नहीं वाले, बहुत पढ़ा है ये जो रूल आता है ना, इट्स जो डायरेक्शन देते हैं ना वो बहुत बड़ा होता है, तो देख कितना पेजेस का है। बट उससे आता है क्वेश्चंस लाइक एक दो आता क्वेश्चंस है, आता है कि आता है, बट आता तो है। आई डोंट वांट टू टेक दैट डीप इनटू इट। ओह माय गॉड। ठीक है, तो कुछ कुछ है, ठीक है। आई एम होपिंग कि मेरे को इसका कहीं समरी मिल जाए। प्रिया मैम। ड्राफ्ट, अच्छा अभी ड्राफ्ट अभी तक फाइनल है।
नहीं, फाइनल कर दिया ना। आ, ये तो पहले वो ड्राफ्ट था, ड्राफ्ट में ये लोग फीडबैक हाँ, मांगते थे इशू रिक्रूटर से। फीडबैक्स वो लोग बोला सही है। अब एंड तो फिर फिर अब अब उसको फाइनल हो गया है अब ये अप्रैल 1 2027 में निकलेगा, देखो। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, 26। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया शेड्यूल कमर्शियल बैंक ब्ला 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 डायरेक्शंस 2026 देखते हैं। इशू कर दिया एआई, है। हाँ, आई नो, आस्क एआई टू समराइज इट, अगर कहीं नहीं मिलता। देखते हैं। एआई बैंक से। इंडिया कैपिटल पर ऑफिशियली क्या? नहीं, ठीक है ना, सो जाए ना। मेरा तो क्लचर ग्यारह बहुत 12:30 दुखता भी नहीं हुआ है। ठीक है, सो जाइए, सो जाइए, सो जाइए। है। अच्छा, वीडियो तुमको शिप बात करने करना से चाहिए। मना कर दिया क्या? Capital requirements against credit risk. Oh, I see what it's trying to say. क्या 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 कैपिटल रिक्वायरमेंट्स जैसे do you know what is हम लोग एसएमए पढ़िए, हाँ। स्टैंडर्ड एसएमए 1 एसएमए 2 फिर यस यस एन एफ यस। एन एन पी ए। यप तो यप यप। उसके लिए जब भी हम लोग लोन देता है बैंक, ठीक है, हम नहीं, जब भी बैंक देता है तो उसको प्रोविजनिंग करना पड़ता है ना, अकॉर्डिंग टू रिस्क, कि सामने वाला जो अच्छा। पार्टी है वो कितना रिस्की पर्सन है, या तो वो अच्छा क्रेडिट रेटिंग है, तो इसके अकॉर्डिंग वो लोग इसको सब क्लासिफाई करता है, ठीक है। हम्म। तो अब वही बोला गया है कि इसमें जो है ना, कमर्शियल बैंक्स के लिए जो चार्जेस था कि कितना वो लोग कोई भी क्रेडिट को क्रेडिट रिस्क पे जो आता है ना चार्जेस, प्रोविजनिंग वाला, कि तेरे को अच्छा। कितना प्रोविजन करना है, तो उसको अप्रोच को चेंज किया है, मतलब इट हैज़ अलाइंड इट विद बेसल 3 नॉर्म्स। अच्छा, आई थिंक आई हैव टू, हमको अच्छे से आई पढ़ना थिंक। पड़ेगा। ये तो हमको पढ़ना ही पड़ेगा। देखते हैं, यहाँ पे पूरा एआई पढ़ते हैं क्या बोला है वो, आई बिजनेस मीन लाइक, वर्ल्ड। हम ये सोच रहे हैं कि देखो, अगर मेरा बाय चांस गलती से हो जाता है, ठीक है, अगर हम इंटरव्यू में जाते हैं एंड दे नो रेगुलेशन गेट टू बेसिस इंटरनेशनल आई वर्क स्टैंडर्ड्स। देन स्टिल लाइक, बताओ तुम, दे आस्क मी एंड दिस इज इम्पोर्टेंट, अगर ये इशू किया है हाँ, तो। initially published a graph of this on 7th of October. Feedback after taking the feedback, the RBI basically completed necessary should the file action accompanied by an annex explaining responses to major comments. Enhance granularity. 2027 ज़्यादा दूर नहीं Although है। the file action was 2027 issued on this allows 27 bank sufficient time to adjust the system, by risk assessment transition period action. methodologies, की adjustment, Modernizing calculation capital charges on credit risk. So if you want to improve। learn about this, इसको capital charges, embedded risk sensitive and granular approach to credit risk management. हमको तो सबसे पहले कैपिटल रिस्क एंड Purpose है कैपिटल with क्रेडिट convergence with पढ़ना National पड़ेगा। Basel 3 standards. एम्बेड। Where for compliance during transition period. Okay, हम लोगों को किया गया कि capital charges for credit risk. व्हाट ये डज पढ़ते हैं। दैट मीन? ठीक है सर, देखिए, क्या क्या हम देखें, अह, क्या देखें? अच्छा, हम तो को बता रहे हैं, capital charge for credit risk is a regulatory requirement that mandates banks to hold a certain amount of capital to cover potential losses from credit exposures, अच्छा, हाँ 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 ensuring हाँ financial हाँ। stability and compliance with regulatory standards। जो हम बोल रहे थे वही है, ठीक है, प्रोविजनिंग करना होता है बैंक्स को। अच्छा, हाँ, कि इतना पैसा तो होना चाहिए क्योंकि हाँ, आधे से ज्यादा चीज तो एनपीए जाता है। वही वही। तो जो अब कितना, जैसे हम लोग पढ़े होगी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का, हम लोग
कितना प्रोविजनिंग हम्म। करते हैं, अगर वो एनपीए वन में लैंड करता है तो हम कितना करते हैं, ठीक है। वो नहीं पता तो हमको, वैसे एनपीवन में ही लैंड। इसका जो कैलकुलेशन होता है, हाँ। तो उसका जो प्रोसेस है उसको थोड़ा चेंज हाँ। किया गया है। कैलकुलेशन जो करते हैं हम लोग, अच्छा, ओके ओके। उसको चेंज किया गया है, कितना परसेंट हम लोग उसको प्रोविजन करेंगे। आ, ये हमारा क्या था? ये हमारा क्रेडिट रिस्क वाला वो है। ठीक है, चलो अब समझ गए न्यूज़ कैपिटल क्या है। चार्जेस फॉर क्रेडिट रिस्क, हाँ बेसिकली बट अभी कैपिटल चेंज किया। चार्ज रिस्क की मतलब क्या ऐसा क्या क्या चेंजेस है, उसको देखने के लिए हम लोग को और थोड़ा इन डेप्थ जाना पड़ेगा न्यूज़ का, ठीक है। पहले लिखते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया डायरेक्शन, फाइनल डायरेक्शन, आरबीआई फाइनल डायरेक्शन ऑन। क्या था ये? आरबीआई इम्पोर्टेंट न्यूज़ है तब सोर्स। ये, अगर ये हाँ। इसके बारे है तो, फाइनल। प्रोविजनिंग के बारे है ये तो मेरे से पक्का इंटरव्यू में पूछ सकता है, अगर हम इंटरव्यू तक पहुंचे तो। बोलेगा क्या तो। सीखा तुमने बैंक में? शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक। ऑन बेसल 3। बेसल 3। ये क्या है? कमर्शियल बैंक्स। 2026 कैपिटल चार्ज फॉर इन इफेक्ट अप्रैल क्रेडिट 2027। रिस्क स्टैंडर्डाइज्ड अप्रोच। ओए, वैसे हम्म मैंने एलिजिबिलिटी चेक नहीं किया आरबीआई का। हम्म। उसका क्या एलिजिबिलिटी है पता चला? नहीं, जनरल में भरोगी एलिजिबल ना तुम, कुछ और तो नहीं भर रही है ना। जनरल मतलब जनरल आई जनरल। मीन उसका एक होता है इकोनॉमिक्स वाला, फाइनेंस, पता ओ नहीं नहीं अलग नहीं अलग नहीं, होता हाँ उसमें तो नहीं करे। नहीं मतलब बिकॉज हम लाइक, है। ओह यार नहीं उन आर्ट्स लोग को एंड, मार्क्स मार्क्स के हिसाब से नहीं 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 लाइक। वैसा नहीं है, यू पता जस्ट चला ही नीड टू दे आर हैव अ लाइक डिग्री। 12th में तुम मैथ्स में फेल आओ। तो बोल देना आई हैव नॉट चेंज्ड, तभी, वरना तुम कैसे निकालती अगर तुम मैथ्स में उधर फेल हुई है। छोड़ छोड़, उतना मत सोच। ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। इस चीज़ का हम बेकार का वो कर रहे हैं, चुपचाप से हम पढ़ाई करते हैं। फालतू फालतू चीज़, नो मोर फालतू चीज़। 1 अप्रैल से ये पक्का पक्का हो जाएगा। और 1 अप्रैल से आई जस्ट नो क्या होगा। Hmm. Uh, what is this? FIFA? Summary. What's this? ये क्या है? Follow. ठीक है, ये देखो, ये पढ़ते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया
So should I stream on Discord also? बात क्या हुआ? हम तो यूट्यूब से देख ही रहे हैं तुमको। नहीं फिर तुम तुरंत देख पाएगी, फिर यूट्यूब बंद कर सकती है। यूट्यूब विल बी जस्ट फॉर डॉक्यूमेंटिंग स्टफ। ओके देन फिर हम यूट्यूब नहीं देखेंगे तब। आरबीआई कमर्शियल बैंक्स कैपिटल चार्ज फॉर क्रेडिट। देखो स्ट्रीम किया। Implement the basic framework of calculating. Okay, this is highlight कर पाते तो करते हैं। Implement the Basel 3 framework. ठीक है। Russian mandate to standardize approach. Shut up. Persuaded based on ओ माय गॉड, expected देख तुम इधर जल्दी बढ़ गए। कैपिटल चार्ज क्रेडिट रिस्क द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज इशूड। risk. ए डिस्कॉर्ड में इतना खराब क्वालिटी क्यों है? YouTube में 1080p है ना। अच्छा आई मीन लाइक मुझे पढ़ने में दिक्कत हो रहा है बिकॉज तो क्या बैड। करूँ मैं? यूट्यूब से देखोगी तो ठीक है, हम बंद कर दे। हाँ यूट्यूब से देख लूंगी। जस्ट तुम्हें 15 सेकंड मेरे लिए थोड़ा पड़ेगा, ठीक है? हाँ। जस्ट 15 सेकंड्स। डिजिटल अलाइनमेंट। बस एक्सपोजर को कम करने के लिए वो किया है। ठीक है, रिस्क वेटेड एक्सपोजर कम करने का, रिस्क एक्सपोजर एंड स्मॉल इंटरनल रिस्क असेसमेंट प्रूडेंट वैल्यूएशन नॉर्म्स एंडिंग इन केस अनहेज फॉरेन करेंसी एक्सपोजर्स। अभी रिसेंटली तो न्यूज़ पड़ी थी, आरबीआई अभी अ, ये जो होता है ना करेंसी एक्सपोजर, फॉरेन अच्छा। करेंसी एक्सपोजर अनहेज, तो इसके लिए भी एक न्यूज़ लाया था। शायद तुम ओ उतना पहले का नहीं। नहीं पढ़ी है। नहीं। इसमें बोला गया था कि अगर तुम्हारा बैंक्स भी बोला गया था, मतलब जो वो आर बैंक्स एंड अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हु आर डीलिंग विद फॉरेन करेंसी एक्सचेंज, हम्म। तो उन लोग को बोला गया था अपना एक्सपोजर जो होता है ना टू लॉसेस या फिर कुछ भी हम्म। वॉलेटिलिटी। Oh, तो by the way, हम्म can we talk in English? Because I feel like staying उम, here, I have just started to adopt a Bihari accent and Bihari way of speaking, and I'm ओके। starting to like weirdly, it also दिस affects the way I speak as आई the नो way आई I नो pronounce somehow. आई नो It's so weird. It's like, oh my God, what the fuck I'm speaking, what the fuck I'm saying. ओके, It's like वी that कैन डू दैट। because I need to prepare. Yes, of course, when we will have debates, you have to choose one language. It's either We English are or going to have Hindi. debates. Yes, of course. Group discussions. We do have the group discussion. Even in SBI, you get group discussions. Not debates, group discussions. And I'm going to die in group discussions. So they are not going to have one interview. It's a very, what do you call it? Uh, Intimidating setup in group discussion. So It's not like you're just hanging around like with friends while a discussion. It's actually you will be seated around a round table. The the discussion we have on movies type shit. but Like there's then a it round would table, be. big meeting hall. Okay, you'll be given mics. The mic will be attached to your desk, and then you have to speak. If you want to speak, just tap on it or raise your hand. They'll turn it on. And, And I'll have to speak surrounded by economists, people who are like deep in economics. Like most of mm, the people who apply to RPA are like people who like economics, right? no, no, it's not necessarily. Uh, But they are well aware of the current
affairs. I hope They might be informed about it, obviously they but might. I think I need to prepare. that So yes, of course you need to prepare for it. But even having vague understanding on the concept about the concept, you can easily answer the questions. doubtful. Just know what it is. Whatever they are saying, just know what it is. And you can also understand from when another person is speaking. You can listen to their whatever they are saying. Okay, it's gonna be fine because you're going to David. So Yeah. Okay. come on, let's study. Okay. Capital charge for credit risk. Standardized approach for accessing credit risk across banking bank. Transparency could be okay. I don't Also, I mean, we have understand to that. improve transparency. What do you don't understand? It's like so much words. I This just basically I don't understand the capital charge for not credit risk. And is the credit risk can be summarized in many ways. I mean, credit risk is a summary of many risks. So under credit risk, we get the NPA. Yes, unhedged mhm, foreign currency exposure. This many there are many things which comes under credit risk. I will have Yeah, to search about it and read in depth about it because analyzing post-crisis reforms. Mhm. as I We this is an important part. What is Basel 3 actually? hmm, Basel 3 is finalizing post-crisis reforms, which was published in December 2017 Basel 3 post for arriving crisis at capital reform. ratios for bank comparable and risk-sensitive manner. Okay, you can write this down. Post Two broad approaches for crisis reform. calculation of risk-based capital requirement for credit risk, standardized approach and internal rating-based approach. Okay, so what RBI has said that we will follow the standardized approach of Basel 3. We will follow standard There are two approaches in Basel 3 framework. approach. Okay, Two approaches. Okay. to calculate risk-based capital requirement. First, we will see what is Basel 3. Basel 3. Basel 3. Idolizing post-crisis reform. For arriving at a capital एक है standardized approach and एक है internal rating. So that is two approach. एक है Uh, they're not going to ask you in such details. Just it's for the understanding. hmm. Okay. I'm gonna ask sir. I'm I going to mean, ask sir. he might know about Basel norms, but of course he should know about this one, this He'll direction. probably know about NPM Of because course, that's just what it deals with every day. rating-based internal ratings. The regular. Powers exercised in convention.
Mm, scope and definition shall apply. Bugs, definitions. Yeah, this is all. We have to cover a lot of it. Uh, I'm not going to go through all of this. This is not a summary. Yes. What we can do is right now we can keep it aside. We'll do Yep, other yep. newses. Put a star on it. Put a star on it. And we will see it later. Basel 3. Basel We'll do 3 Basel 3 and later. capital charge for credit with standardized approach. Next news. This is the same news. Why? Vasika? Hey, credit guarantee fund. Yeah, yeah, yeah. What? That I because I always like I have NEF credit guarantee wala thing. Credit guarantee? Where? Yes, CGTMS Credit guarantee? CGTMSE. What is that? CGT? I MSE. It's I know it's credit guarantee some I don't remember. CGTMSE. Yes, CGTMSE. It's a credit guarantee fund Trans. trust for micro and small Ah, credit का guarantee trust of charges fund. कटता है so I I do the pro Oh, you do the process. yes. Due diligence requirement and instructions. We will not go through all of this. I'll just wait Hmm. for someone to do a summary on it and just read. I'll just go through it. Okay, the next news is RBI direction asset classification, provisioning, and income recognition for commercial bank. I think it's similar to the previous one. Wait, Uh, I can yes, it is actually similar. It is actually the same thing. Just they have issued it in this is different title. what are you seeing? Because my screen it is like a Reserve Bank of India schedule commercial. अच्छा ए अभी आया RBI issues action on Let's see here. oh so the same stuff I Classification as guess. deemed appropriate but suitably incorporated in the final statement and feedback. Annex according to Reserve Bank of India issued the final direction consequently 13 amendments direction. And one CPL repeal direction direction. has been issued. Reserve Bank of resolution has started. Oh my I god. feel like these are important on asset classification, Yeah, provisioning, income recognition. I'll have to do a star. just start it for I'll now. have to I'll because just this is start it too for now. long. Yep. Or we can find Priya ma'am. Yep. She'll probably cover it in a short month. It's like they should start action on reporting thrice dealer category banks Provisioning seeking and feedback what's from us. that? Asset class. No, it is not No important. It is asset. not important. I mean, they have Not just draft the direction. Now they are seeking the feedback oh received. Direction has been examined. If a modification has been suitably incorporated in the final direction statement. Certain feedback and important comments that have been shared. Much for this direction. Should have too authorized many dealer category directions. 1 banks. There's a lot to read here. We have to go through this though. I think I have done this before. This this news. You have In done terms of this. which authorized Reporting you know who are authorized dealer? Category authorized one. dealers of what? Category one. Who are authorized dealer? What does it mean? Do you know who is a नहीं authorized dealer? You don't know. The नहीं authorized dealer, those which are authorized by RBI to carry out financing activities on behalf of on behalf not on behalf of banks, but it's like BCS. they trade with government securities.
So if government अच्छा, if the okay. government needs any money, so they can go to these authorized dealers. So they can buy government securities and give government the money and Hmm. whatnot. They can carry out money market uh, operations. Okay. I'll Okay, have to authorized see dealer authorized. banks are required to report all over the counter foreign exchange. Okay, we can do this. Okay. So basically, they are bank ka representative. Hmm? Direction. No, not representative of bank, but a financial institution because not all banks are authorized dealer, but not every bank can become authorized dealer. There are certain procedures and eligibility criteria before making them authorized dealer. Oh, what is this news? Direction for authorized dealer category one. Category one banks. Oh, this is specifically for the banks. Mustard. Acha, एक quick question. Hmm. Do you know what is Federal Reserve? Federal Reserve. Hmm. Reserve that RBI has. Huh? What the foreign reserve हो गया? That is foreign reserve. Ouch. What is Federal Reserve? Do you know what is Federal Bank? हाँ हाँ वो तो अमेरिका का है. Yep. Then Oh, so it's that yep, the उसका है फेडरल foreign. रिजर्व. Yep. Oh, तब हमको लग ही रहा था but then I was not sure so like अब ठीक है वो तो आरबीआई का जैसे जैसे आरबीआई है हमारे देश का वैसे Okay. Now, अमेरिका का है so just like India, Federal Bank also as their bi-monthly financial statement. Okay. I mean, oh I mean, bi-monthly financial oh speech or meeting. Okay, in which they decide what will be the rates, federal rates. It's similar to our rate. Okay. okay. Uh, then, do you know who is the governor of Federal Bank? Wait. Mm, Or should I say no, someone who was a governor? Now they are being replaced. I do The not know yesterday, Federal Bank. yesterday it was his last speech, last meeting. Oh, Yep. I do not know about America. I mean, it's an important factor when I know Federal Bank. Uh, because of his one decision, he can shake entire world market. huh, You have such powers. Federal Bank. I'll have to search who is the wait governor or the what Whatever they governor? have, not they don't basically call them governor. It's like it's uh policy. I don't know what they call them. Someone who is leading Federal Bank. Okay, I'll have to search. Okay, can you like pause 5 minutes? Mosquitoes are biting me. They Oh are no. trying to take my blood. So 5 minutes. Give me 5 minutes. Okay. What's that?
Hello, Huh? I am back. So, For will damage. you tell me or shall I tell? If by outshot rate, what is Federal the Bank. all OTC related contracts related contracts bank shall be permitted with the view of providing Hmm. is not required. Shall take in terms of back to back where the shall have the option of not required transfer of notional contracts. See that is not. Hello, Yeah, I'm confused. I searched the Federal Bank. It came like it is also a bank in India, and then I searched Federal Bank of India. So it's like there is Federal Reserve and there is Bank of America. yep. Bank of America is private, and there is a Federal. Federal Reserve, Federal What? Reserve. This, yeah, So what is the equivalent of RBI? Federal Reserve. Federal Reserve. Uh, It's like a central banking system. of America. Powell. Wait. J. Jimmy Powell. He is replacing the guy or he's being replaced? He is being replaced by someone. Powell to stay on federal policy as a policy. What the heck? Why does Trump has a problem? Everybody. Acha, Jerome HK. Jeremy. Everything is behind a paywall. Why is everything US? The US Federal Chair Jerome. There's lots of laws and rules you have to go through. Done. This news is also covered. It also covered RBI plus monetary penalty. And Chan Kalyan Shakari Bank Limited. Hey, this is an easy news. Look at this. So who RBI. is replacing him? Kevin Walsh. Uh, uh, Kevin New Walsh is a pro Bitcoin. Bit pro Bitcoin user. Like not a pro like pro Palestinian. Then I say pro Bitcoin Stephen Miran. supports. What? Kevin Walsh. I'm seeing. I searched Federal Reserve new governor. Hmm. Stephen. Nobody's saying who is going to be the. It's a every. Just search Kevin Walsh. KEVIN WARSH. American governor of. Chan Kalyan Shakari Bank Limited by He is RBI. assuming of. Yep. Uh,
Kevin Maxwell. What are you studying? Shit. Accident. Non-compliance. ए यू आर ए तुम क्या क्या कवर कर लिए मेरे बिना? हाँ, Two news. दो न्यूज Social ceiling. बताए भी नहीं। 5 मिनट हम गए मच्छर मच्छर मारने वाला लगाने। Okay, हाथ the देखो हमारे। previous news was not that important क्योंकि it's just that a direction has been issued for category one uh, authorized dealer banks. Okay, in that direction, it has said that they have to report every over-the-counter foreign exchange derivative contracts, which involves Indian rupee. Now, these all transaction is mandatory for them if the contract value is not if the contract value is exceeding $1 million, then they have to report it to a trading depository or a clearing corporation of India. That's a mandatory thing. If the contract value is less than $1 million, then they can and cannot. Okay. सब मेरे सर के ऊपर से गया। Oh no, I think I'm a bad explainer. I'm sorry, I मुझे जो मेरे को मेरा स्क्रीन दिखता है उसके हिसाब से हम डिलीट कर पाएंगे। No, oh, no, ये news, this news is very easy. Okay. मॉनेटरी पेनल्टी ऑन जन कल्याण सा। हम हमेशा उसको शाकाहारी पढ़ते हैं, शाकाहारी शाकाहारी नहीं, शाकाहारी। शाकाहारी शाकाहारी बैंक. तो एक बकरी लोग का बैंक है। Yeah, I also do the शाक same. शाकाहारी बैंक लिमिटेड। Shaकाहारी. पोस्ट मॉनेटरी No, पेनल्टी no, no. ऑफ। Okay, I'll explain it in short. You don't have to go through all of that. Okay. RBI penalty on Jan Kalyan Shakari Bank, which is situated in Mumbai. The penalty is of 3.30 lakhs, and the reason for नॉट it, मच। yes, but it's still a lot. Okay. And the reason was that the reason is that it was not in compliance with exposure ceiling to group borrowers. It did not follow RBI direction on exposure ceiling to group borrowers. नॉन कंप्लायंस टू व्हाट इज दिस एक्सपोजर सीलिंग टू ग्रुप borrowers. We have to only do that much in this one. Hmm? We can do the next. Bandhan Bank. This is important. Wait, Okay. Now another news. It is also wait. imposes monetary penalty on Bandhan Bank. Hmm. Monetary policy हम पढ़ रहे हैं। पेनल्टी The Reserve Bank बंधन has imposed a penalty on Bandhan Bank. कितना का? 41.80 lakh rupees. 40 लाख।
lakh for contribution provision of 21B or Section of bank regulation by non-compliance certified 21B. by RBI. Okay, non-compliance with some directions related to know your customer, Banking Regulation know Act. your customer norms. Banking Regulation Act and non-compliance with certain direction. You don't have to go. You don't have to write all of section 21B3 of bank regulation act. I wrote it Okay, good for you. with KYC. 1949. Oh no, I had sanctioned Hmm. director related loans. Hmm. यानी कि big ass loan. The bank failed to carry a periodic review of risk categorization of certain categories of accounts. The bank had sanctioned director related loans. What is a director related loans? पता नहीं but director imagine like I am imagine director CEO position type shit वाला loan like probably like Oh, 1 crore shit not big like loans. छोटा छोटा big loans उस हिसाब से I see. I'm imagining. So it was not following these guidelines. Okay. So we have covered every important RBI press release news. Okay. Hmm. Now we can do is go through PIB. PIB is bit easy. You don't have to Hmm. indulge into deep thinking. Okay. Hmm. So Okay. now we have done press release. Now we'll do PIB. Okay. Yeah. I can give you Okay, a show break. me how do you I can give study. you 10 minutes break. Okay. Okay, okay. I'm not hungry, but I wanna munch on snacks. Like Uh, I'm hungry, तुम but पढ़ रहे हो रेलवे मिनिस्टर अश्विनी South Coastal Railway major expansion. Okay, so we only have इस बार आज के Like, this is पीआईबी में important. Andhra Pradesh has achieved 100% electrification of its railway network. what आंध्र प्रदेश has achieved 100%. वाह झारखंड का कितना आंध्र प्रदेश The railway minister, Ashwini what is his name अश्विनी Vaishnav, Vaishnav announced Andhra Pradesh. Google Cloud India AI Hub at Visakhapatnam. He is the Union Minister for Railway. में क्या था And मेटी क्या था हम भूल रहे Minister of हैं Information, Ministry of Electronics Information Technology. मेटी Hmm. इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी so why is that why I give up forever हम कुछ लिख नहीं रहे हैं क्या तुम कुछ लिख रहे हो Huh. मतलब बाकी सारा हम लिखे हैं Andhra Pradesh अभी has पीआईबी achieved शुरू achieve 100%. पीआईबी में Hmm. पीआईबी वाला Hmm. because I thought taking Yes, any I'm also taking a break, but after doing this news, completely.
अरुणाचल प्रदेश। Electrification, So 100%. अरुणाचल हम कर रहे हैं, आंध्र प्रदेश। Electrification, Australia. Okay, addressing the gathering after the groundbreaking. Google Cloud India AI Hub. Ah, GS Navy Vaishnav. Sent Gazette notification for the creation of South Coastal Railway Zone. Which आंध्र create the South Coastal Railway Zone. नहीं था क्या? Was it not there? South Coastal क्या? Railway Zone. अच्छा, पता नहीं। I think it was not there. South Coastal नहीं था. I guess South Zone था. Railway Zone will be showed on being notified however development market significance there and expanding uh, Andhra Pradesh expand railway network in Andhra Pradesh massive uh, how much money will be involved it is not written right railway network expand railway network Andhra Pradesh Andhra okay it has said that the railway budget allocated for this is 10,134 crore outlay of 10,134 crore rupees compared to allocated in the earlier it was earlier 886 crore was allotted combined Manipulation Telangana. Links to port tourism referring to as stated uh, 74 railway stations. There are 74 railway stations in Andhra Pradesh. It's also said that. Is this important? I don't think so. Hello, Yes. what are you doing? Okay, for the city I'm stated in like Andhra Pradesh, taking a 500 break. past I did write the heading, but then you are reading uh it is like YouTube is a little delayed, so like okay. there are 22 Amrit Bharat train services currently serve the state. I mean, the area network okay. So is should I read the details, or Hmm. is it like the headlines are enough? Headlines are enough to know which news is important. If you find that news to be important, just go through it once and mark the important points. And if you want, you can note it down. First of May. PIDA. It's not this. This is not important. Hey, This what is not about important. break? This is yes. I'm just reading. I'm not writing anything. I'm just reading. Agriculture Vishnu and Krishna processed Ganga. food.
Do you know this Ganga Expressway? Uh, हाँ हाँ this is हाँ this हाँ, one गंगा of India's एक्सप्रेसवे biggest क्योंकि expressway and गया ना। UP's biggest expressway and one of ओके, India's biggest. I think is its length is 573 kilometer if I remember. Is it written here? आई माइट हैव रिटन इट डाउन, लेट मी सी। I have done this. I just Survey I just opened it because I want to show you what is important, what is not. 594 kilometers। Oh, 594. I thought 573. It's okay. 594, let's remember 590, Okay, Ganga 590। Expressway 594. Next news. DFS Okay, of Public Sector Insurance Company NICL, NICL, UICL, and AICL. MNAR the need for developing new and innovative customer products to meet the requirement. This is just a report, nothing related to data or a new policy. well अब मेरे में तो अभी भी वही चल रहा है। अभी आया डीएफएस वाला, सेक्रेटरी डीएफएस शेयर्स पढ़ना रहता है। Uh, Vision strategy documents for public sector insurance company, namely. This is just reviewing strategy to strengthen the four insurance company: New India Assurance, General, NICL, UICL, Agriculture Insurance Company of India Limited. I can't find it. Mm, Okay. Mm, this is important. We will do it after a short break. Okay. I'll take okay, a rest.